Okay. Excuse me, sir. सर इसको कब जी, सबमिट बोले। करें असाइनमेंट को? आपका सीआर कौन है? नोमान। तो नोमान ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नोमान से तो मेरी कल बात हुई है। ऑफलाइन है सर वो अभी तक। नहीं, उसने व्हाट्सएप नहीं किया आप लोगों को? सर वो व्हाट्सएप पे तो नहीं किया सर। अच्छा, उससे मेरी बात हुई है। उसको मैंने कहा कि ट्यूसडे सर जी किया है, उसने इन्फॉर्म किया, उसने क्लैरिफिकेशन की है सर। ठीक है। बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे आप लोग सबमिट कर सकते हैं। सर इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना है या डायरेक्टली एक्सेल शीट ही सबमिट कराएं? अगर पीडीएफ में कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में हो। ओके सर। ठीक है। सो Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the estimation of RCC works. This is lecture number 9, and our today's lecture will be covered from this, and our next week will also be. We will discuss this lecture in the next week as well. So initially, we will discuss some basic concepts regarding the RCC structures and RCC works. If we talk about the concrete work, so you all know that the concrete work is estimated in cubic meters or volumetric units, and इसमें जो centering या shuttering की quantity है वो include नहीं होती. So the concrete work will include only the concrete work. ठीक है, इसमें steel work include नहीं होगा, इसमें shuttering etc. भी include नहीं होगी, and this is usually measured in cubic meters. If we talk about the centering and shuttering or form work, so these things are measured in square meters, area units, based upon how much area needs to be covered or needs to be supported with the shuttering or form work. Steel reinforcement, including bending, cutting, binding, and placing in position, is measured in quintals and are paid separately. So, if you look into the MRS, so the rate for steel is given, which is not, which will include the rate of labor charges or transportation charges, and it will include the cutting charges and bending and binding and placing. All of these things are included in the rate which is paid to the contractor. So, if you're working as a consultant supervising a project and you're checking the bills submitted by the contractor, तो अगर in case contractor steel का cost अलग claim कर रहा है और उसके साथ साथ फिर वो अपना labor charges जो उसने steel fixers को देना है या उसमें bending charges या wastage जितनी भी आई अगर वो भी extra claim कर रहा है, so that will not be justifiable. ठीक है, आप उसको reject कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम कर रहा है. तो बी केयरफुल इन दिस. So let's talk about the quantity of steel
when you are estimating the quantity of steel. So the first bullet is saying that the no deduction for steel is made from the volume of concrete. So this point is already discussed in the previous lectures. जब आप कंक्रीट का वॉल्यूम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो जाहिर है जब उसमें रीइंफोर्समेंट भी होती है तो the reinforcement will take occupy some volume, but which will reduce the volume of concrete which will be required to fill up the mold. लेकिन वो वॉल्यूम आप डिडक्ट नहीं करते उसमें से. The cost of binding wire and wastage of steel is considered in the item of steel reinforcement, already discussed. When detailed drawings of steel reinforcement are not available, it is worked out using the following thumb rules. So in the next slides, there are some thumb rules given to you for estimating the quantity of steel required when the detailed structural drawings or detailed drawings for steel reinforcement is not available. So assuming the density of steel as 7850 kilogram per cubic meters or 490 pounds per cubic feet. So these are some thumb rules. For example, if we talk about the RCC slab, so this is the column number 1 is showing you the serial numbers. The second column is showing you item. Third column is showing you the percentage of steel per cubic meter of concrete, and the fourth column is steel in kilograms. So if we talk about the RCC slab, so you can take 1% to 1.5% of the volume of concrete. In cubic meters. So for example, the volume of concrete is 100 cubic meter. So the amount of steel required will be 1 cubic meter. Or if we talk about the weight of steel, so if the covered area of the slab is 1 square meter, so amount of steel required or reinforcement required for this area will be 8 kilograms. So you can calculate the total covered area of the slab and multiply it with the 8 kilogram per square meter, and you can get the weight of the steel. Similarly, for beam, RCC beam, this percentage is 2%, and the weight of steel per cubic meters is 130 kilogram per cubic meters. Similarly, for example, if you talk about the columns, so in columns you can take a rough value of 175 kilogram per cubic meter. So you can take out it is easy to calculate the volume of concrete required for the column, because it is simply length into width into height, and you can multiply that volume with the this value 175 kilogram per cubic meter, and you can get the total amount of steel required, an approximate value. You can read and go through the other values as well. Here is the table with which you are already familiar. आपको just एक revision के लिए मैंने provide किया यहाँ पर. These are the dia of the number of the bars and weight per feet of the bars and kilogram per meter. And this is the nominal dia in mm and inches, and nominal area in inches, inch square and millimeter square. So आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई वैल्यू चाहिए होगा. Is there any question till this point? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक?
No, sir. अच्छा, so let's talk about the calculation of the number of bars if the center-to-center spacing is given to you. So this is very simple and basic formula. So आप लोगों ने RCD का कोर्स पढ़ा होगा, reinforced concrete design 1 and reinforced concrete design 2. So आप वहाँ पे जब stirrups प्रोवाइड करते हैं या ties प्रोवाइड करते हैं beams में, then you usually use the center-to-center spacing. Or if you are providing the reinforcement bars in the slabs, so there as well आप center-to-center spacing use करते हैं to in detailing the drawings. So जब आपको estimation करनी होगी, detailed estimation, and you are given or you are provided with the detailed drawings of the structure, so and you want to calculate the number of bars, so this will be simply equal to length of the component minus 2 times cover. Cover में तो आप reinforcement नहीं देंगे ना, तो length of the component minus cover for one side and cover for the other side, so there are 2 times the cover. This divided by the center-to-center spacing of the bars or the stirrups. This will give you the number of bars and plus 1. So the number of bars given to you by this formula, add 1 and this, and you will get the total number of the bars or number of stirrups which will be used in the particular element. Clear है? Simple है, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे. Still, if there is any confusion, you can ask. कोई कंफ्यूजन नहीं है. काफी इंटेलिजेंट हो गए आप लोग. नहीं है सर. ओके, ठीक है. हाँ ना, एटलीस्ट कर दिया करें, मुझे शक हो जाता है कि कहीं पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो. ठीक है. ओके सर. So as you have already seen in the reinforced concrete design, normally there are different type of bars used in the design. Some of them are main steel bars which are used for the positive reinforcement. Some of them are alternate bent up bars. अगर आपको एजेस पे नेगेटिव reinforcement प्रोवाइड करनी है और एक ही बार आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिड स्पैन पे पॉजिटिव reinforcement चाहिए होती है एंड एजेस पे नेगेटिव reinforcement चाहिए होती है, तो यू कैन बेंड अप द बार ऑन द बोथ साइड्स. Although such type of distribution was used earlier, लेकिन nowadays इसमें लेबर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है उसको करेक्ट जगह पे बेंड करने के लिए और करेक्ट एंगल पे, तो नॉर्मली लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और सिंपली पॉजिटिव बार्स के लिए अलग पीस कट करते हैं और नेगेटिव बार्स के लिए अलग पीस कट करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर, आप ड्राइंग्स को रेफर करेंगे, जैसा भी ड्राइंग में शो हुआ है तो आप उसी हिसाब से एस्टिमेशन करेंगे. And the third type of bars are the distribution bars, okay, which are not the main bars but they are used for the other purposes, for example shrinkage or any other for any other purpose, which are these bars are normally in
perpendicular direction to the main bars. Okay, so all of these discussions are depending upon the drawing. So let's see. Straight bars and alternate bent up bars are arranged alternatively. Okay. So the distance between two straight bars or two bent up bars are considered double than the center to center distance given in the drawing. So for example, if I'm talking about these bent up bars, so normal practice is that if you are providing these bent up bars in a slab, then each bar will not be the bent up bar. One bar will be the bent up bar like this, and the other will be like this or this straight bar. Then third bar rebar will again be of the shape of this bent up bar, and then the fourth will be again straight bar. So if I'm calculating the number of bars, number of bent up bars, so what will I do? I'll be taking the center to center spacing between two bent up bars. So so it will be the center to center spacing will be doubled in this case. But in some cases, if you are providing the bent up bars, which is having a bend on only one side, so in this case, the normal practice is these are not alternate bars. These are These are placed next to each other. So one bend will be on the right side, and the other bend will be on the left side. Then again, the third bend will be on the right side, and the fourth bend will be on the left side. So इसमें आपको स्पेसिंग डबल करने की जरूरत नहीं है. सिंपली जो गिवन स्पेसिंग होगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी, वही आप कंसिडर करके नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर सकते हैं. So all these discussion is about the calculation of number of bars. Okay, do you have any idea कि ये hooks क्यों provide करते हैं? Earthquake के लिए सर ये प्रोवाइड करते हैं. Sorry? earthquake रेजिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं. earthquake resistance के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्टेरअप्स हैं या टाइज हैं उन हुक्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, तब तो ठीक है. But these hooks are in the plain bars. बार्स कितने हो सर? सर ये जब टेंसाइल स्ट्रेसेस लगती हैं इस पे, ये कंप्रेसिव, तो इसी वजह से सर हम हुक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो बार होते हैं सर, इनको स्टिफ फॉर्म मिलाने के लिए, ताकि ये बीम वगैरह से बाहर ना आए. Okay, good. To avoid the pulling out of the bar. ऐसा ही है. Yes sir. Okay. So these hooks are having their particular specifications given in the drawings. अगर मेरे पास कोई एक्चुअल ड्राइंग पड़ी हो तो उसके स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट पेज होता है उसमें ड्राइंग नोट्स होते हैं. उसमें डिजाइनर ने सब इंफॉर्मेशन दी होती है कि अगर आपने हुक प्रोवाइड करना है तो उसका साइज कितना होगा डिपेंडिंग अपॉन द बार. द डाया ऑफ द हुक इज नॉर्मली in terms of the डाया ऑफ द बार. तो अगर आपका बार का डाया ज्यादा है तो आपके हुक का साइज भी ज्यादा होगा. सिमिलरली जो लैप स्प्लाइस होता है, लैप स्प्लाइस क्या होता है? लैप स्प्लाइस सर ये दो बार जो होते हैं हम उसको जो कनेक्ट करते हैं सर. हाँ जी. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बीम का स्पैन ज्यादा है और आपको उतनी लेंथ का रीइंफोर्समेंट अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में फिर दो रीइंफोर्समेंट बार्स को ज्वाइन कर देते हैं. अब ज्वाइन ऐसे नहीं करते कि एंड टू एंड आप दोनों को मिला दें और उनको. नहीं सर, कुछ लेंथ
तो कुछ लेंथ उनकी ओवरलैप की जाती है, तो दैट ओवरलैप इज बेसिकली कॉल्ड एज लैप स्प्लाइस. So we will discuss the lap splice in the coming slides. So first of all, let's discuss these hooks. These hooks are provided to increase the bond strength, the bond between the concrete and the reinforcement. ये hooks पहले भी बहुत important होते थे, क्योंकि पहले जो reinforcement bars आते थे, those bars were plain bars. उनके ऊपर ये impressions नहीं होते थे. आजकल की आप reinforcement देखते हैं तो उसके ऊपर ribs बनी होती है या कुछ पैटर्न बना होता है. So that pattern improves the bond between the reinforcement bar and the concrete. लेकिन जब प्लेन बार होते थे तो वो बॉन्ड तो होता नहीं था ऐसे कोई, तो देयर वाज अ ग्रेट चांस ऑफ स्लिपेज. तो जब स्लिप होता है बार तो दैट will decrease the strength of the component. For example, if it is a beam or it is a column, not column, slab, so that will decrease the strength of that component. तो उस केस में क्या करते थे कि यहाँ पे एजेस पे, एंड्स पे reinforcement बार के हर एक एंड पे हुक प्रोवाइड कर दिया जाता था. That hook was providing additional embedment and was helping the reinforcement bar to resist the slippage between the concrete and the reinforcement. आप जब बीम डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ assumptions होती हैं. आरसीडी में आपने जब पढ़ा हो, कुछ बीम जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो बीम्स की कुछ बीम डिजाइन के लिए आप कुछ स्टार्ट में assumptions करते हैं. उन assumptions में से एक assumption क्या है? चलें उनमें से कोई assumption आपको याद है? जैसे एक assumption होती है plane section will remain plane before and after bending. कुछ याद आया? यस सर. और कोई assumption? सर इलास्टिक नेचर होगी इसकी. हाँ, और हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा. गुड. एक वो assumption है जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है. Let me help you out. There will be no slippage, or there will be zero slippage between the reinforcement bar and the concrete. ये भी है ना assumption. सर परफेक्ट बॉन्ड होगी सर, ये Perfect bond होगा. तो जब perfect bond होगा तो it means there is no slippage. Slip नहीं हो रहा reinforcement concrete के अंदर, क्योंकि bond जो है perfect है. अब उस चीज को हमने 100% तो परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर कर सकते हैं. तो कुछ एफर्ट या हम हुक प्रोवाइड करके कर सकते हैं, या कुछ रिइंफोर्समेंट बार पे रिब्स प्रोवाइड करके कर सकते हैं. तो दैट इज द बेसिक एम. सो our topic of discussion is how to calculate this extra length which will be required for the hook. So let's assume that the dia of the bar is D, ठीक है, and the dia of the internal dia of this internal dia of this bend is 2D, 2 times the dia of the bar. और ये जो bend के बाद additional length है, that is 4 times dia of bar. तो जब ये internal radius जो है 2D, तो जब internal radius 2D है तो internal dia कितना होगा? 4D. ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes. Okay. And this length is 9D.
from this point to this point. So actually we want to calculate this 9d, how this 9d is, they have written this 9d extra length required for this bend. So आप इसको भूल जाएं कि ये गिवन है. If this internal radius is 2 times d and the dia of the bar is 1 time d, so what will be the total length from this point to this point? This will be 3d. All right. Yes, sir. Okay. If I calculate the internal radius of this semicircle, what it will be? 2 times dia of bar plus half dia of bar. 2.5 d हो जाएगा. Yes, sir. So d is 2.5 times dia of bar. ठीक है. अब सरकमफ्रेंस क्या होगा इस फुल सर्कल का? अगर फुल सर्कल में लूं तो 2 पाई r होता है. यस सर. आप लोग करेक्ट नहीं कर रहे मुझे. दिस विल नॉट बी द d, इट विल बी द रेडियस r. ठीक है, ये रेडियस होगा. तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर इस केस में? Pi हो r. जाएगा सर. 2 पाई r में ये पुट करें 2.5 d. 2 into 2.5 5d, 5 pi d, 5 pi d. अब यहाँ पे तो फुल सर्कल नहीं है ना, हाफ सर्कल है. तो इसको डिवाइड कर देते हैं बाय 2. This will be equal to 5 by 2 and pi d. Sorry for the bad handwriting. तो हमारे पास जो ये लेंथ आ जाती है इंटरनल लेंथ, लेंथ एट द मिड पॉइंट. So that will be 5 by 2 pi d, which is this one, 5 by 2 into pi and d. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अच्छा, तो अगर इसमें आप हमें लेंथ चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो 5 by 2 pi d plus 4d, ये कैलकुलेट करें क्या आता है? कैलकुलेट करें प्लीज, क्या आता है इससे? 6.5 सर. 6.5. सॉरी
6.5 sir. 6.5. Let me calculate. $11.85 आ रहा है, 6.5 कैसे आ रहा है? दोबारा करें। 5/2 पाई डी प्लस 4d। पाई की वैल्यू पुट करें ना आप, दोनों को एक कैसे पाई डी को डी के साथ कैसे ऐड कर रहे हैं? पाई की वैल्यू पुट करें फिर ऐड करें। जी कैलकुलेट हुआ 11.85 आ रहा है सर। 11.85 गुड। So this is the length of the hook from this point to this point, but जो straight length of the bar है वो already हमने यहाँ तक ली हुई है, तो straight length of ये approximately ये portion जो बन रहा है वो 3d बन रहा है, तो you can subtract this 3d from this 11.85d। subtract करें 3d 8.85 8.85d, which can be taken as if you round it, so 9 times of bar. So for one hook, the extra length required for the hook, extra length of reinforcement required for the hook is 9 times die of bar. For the hook having the dia internal radius equal to 2 times dia of bar and the additional length equal to 4 times dia of bar. So if these are the properties of the hook, so the extra length required for the hook will be 9 times dia of bar. So depending upon the dimensions of the hook, you can calculate the extra length required for each hook. ठीक है, समझ आ गई? सर अगर लेंथ 2d हो जाए और ये इंटरनल रेडियस 4d हो जाए फिर भी सर ये 9d होगा ये लेंथ। अगर लेंथ थोड़ी हो जाए, यस सर, अगर डाया मतलब 2d हो जाए, डायमीटर 2d हो जाए और ये 2d की जगह 4d हो जाए मतलब। आप कह रहे हैं ये 4d हो जाए और ये 8d हो जाए? यस सर। नहीं, फिर तो चेंज हो जाएगा ना, फिर 9d चेंज होगा सर। फिर चेंज हो जाएगी। ओके। तो अब आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में उन्होंने किस टाइप के हुक्स देने हैं या फील्ड में किस टाइप के हुक्स देने हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दी हुक्स, those hooks you can calculate a rough value which needs to be added in the reinforcement length for each hook. ये आपको मैंने छोटी सी एक्सरसाइज करवाई है कि अगर आपके पास हुक इस टाइप का हो, अब फील्ड में तो आपके पास मुख्तलिफ सिनेरियो आ सकते हैं, आपको बेसिक तरीका आना चाहिए and you can calculate each and everything required to you. ठीक है, is it clear? Yes, sir. Okay. The next point is the calculation of length of the additional length required for each bend. So you know very well that अगर आपका एक straight bar है और अगर आप उसी बार को बेंड करते हैं तो उसकी टोटल लेंथ कम हो जाती है। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, तो उसकी टोटल लेंथ कम हो जाएगी
जो उसकी जो लेंथ उसने कवर करनी है वो कम हो जाएगी. So how much additional length will be required so that if you are bending the bar, then still the bar is capable of reaching or covering the required span. तो वो additional length क्या होगी? Now let's calculate that in generalized form. So look at this figure, please. If the angle of the bend is theta and the effective depth means the center of the bar at the top of the top edge. अगर मैं इसको top edge कहूँ और इसको bottom edge कहूँ, तो center of the bar at top and center of the bottom at the center of the bar at the bottom. So distance between these two centers is termed as x. So this x will be known. तो ये x आपके पास कैसे known होगा? Because the depth of the slab, it will depend upon the depth of slab or thickness of the slab or depth of the beam. So depending upon that values, you can calculate this value of the x. So this value is known to you and the angle of the bend is known to you. ठीक है? अब look at this figure. It is making a triangle ADC. ठीक है? अगर ये AD को which is the straight length, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ तक आता हूँ और इस लेंथ को मैं ऐड करता हूँ यहाँ से C से जो onwards लेंथ है उसके साथ ऐड करता हूँ, तो this will be the straight length. So it means this is the straight length AD. So AD, if I make an arc and bring this bring this line segment to this point, so this AD will be having the same length as AB. So the extra length required for each bend of angle theta will be AC minus AB. This will give me this extra length which will be required to add for each bend. Now, how you can calculate these AB and AC? So it is simple from the trigonometry. You can use, the value of perpendicular and you want to calculate the base. So you can use the trigonometric functions as sine theta is equal to perpendicular by base. So perpendicular is known to you and base is unknown. So you can rearrange the terms and you will get the x by tangent theta. Similarly, if you want to calculate the AC, so in this case hypotenuse is unknown to you and perpendicular is known to you, so you will use the sine is equal to perpendicular by hypotenuse. So you have the perpendicular value for the perpendicular and you know the theta, so you can rearrange the terms and get x by sine theta. So the extra length required for this one bend having an angle of theta is x by sine theta minus x by tangent theta, or you can simplify it as x into 1 by sine theta minus 1 by tangent theta. Is this clear? Yes, sir. Okay. Okay, based upon this formula, we can derive some values for common angles of bend. So the common angles are 30, 45, and 60. So we can generalize these values as if the
bent angle is 45 degrees and you are having the value of x. So x by sine 45 minus x by tangent 45 will give you x divided by 1 over under root 2 minus x over 1. If you simplify these calculations, and so you'll get 0.42. You can solve it by yourself. This is very simple calculation है. Under root 2 into x minus x, तो इसको x कॉमन हो जाएगा, under root 2 minus 1 हो जाएगा, under root 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें 1.42 minus 1, and this will give you the 0.42 times x. So this is near to 0.45. तो मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो ये हो जाएगा 0.45x. So if the bend of the if the bend is having an angle of 45 degrees, so the extra length required for each bend is 0.45 times x. Okay, so if the angle of the bend is 30 degrees, so put the theta equal to 30 degree in both of these terminologies, x by sine 30 minus x by tangent 30, and this will give you a value of 0.27x, which can be rounded to 0.30x. So it is easy to remember now that if the angle of the bend is 30 degree, then I will need an additional length of 0.30x. And the same thing you can calculate for the theta equal to 60 degrees. You will get 0.60x. You can do it by yourself. Okay. How to find the individual length of a stirrup? So the individual length of the stirrup will be 2 times a 2-leg stirrup. If you are talking about the 2-leg stirrup, so 2 times this vertical side, for 1 for this plus 1 for this, plus 2 times this horizontal length of this horizontal side, 1 for this and 1 for this, plus hook allowance. So the different standards are recommending different extra length or the hook length. So normally the 12 times dia of the bar is used as length of the one hook. So if there are 2 hooks, so this will be 24 times dia of bar, or 0.15 meter, whichever is the greater. ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे या पिछली स्लाइड में? सर Okay, if I talk about the overlapping bars, so please ignore these values. आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूँ. आपने जो वैल्यूज यूज करनी है वो आपने एज पर दी डिटेल ड्राइंग्स आपने यूज करनी है कि लैब कितना होगा, लैब की लेंथ कितनी होगी, या बेंड की लेंथ कितनी होगी, या हुक की लेंथ कितनी होगी, या एंगल कितना होगा. सो यू विल गो एज पर दी ड्राइंग्स. बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि आपने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो मैं यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ. सो इफ द ओवरलैप लेंथ इज 40 टाइम्स डी और 45 times d, जो भी हो, तो length of the overlap will be you will add 1 times 45 times dia of bar for 1 overlap. And if in the drawings it is recommended that you should provide these hooks at the end of each bar for the overlap, so add 45 plus 90 plus 90. ठीक है. तो अगर आपके लेंथ ऑफ द ओवरलैप
आपको चाहिए कि एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट कितनी लगेगी एक ओवरलैप में, तो if you are taking 40 times dive bar, so 40 times dive bar plus 9d plus 9d, this will give you the extra length required for the hook. Now this 40 times dive bar, I again repeat that this will depend upon the detailed drawings or drawing notes. आपने drawing notes को रेफर करना है कि वहां पे क्या मेंशन है. Okay, so here is a table in which different shapes of the bars are shown to you, and you have to calculate the total straight length of the bar, total length of the reinforcement required to be cutted. तो अगर ये हो तो total length कितनी हो जाएगी बार की? Anyone from you? L plus 2 times 90. Okay, good. In this case, L plus 2 times 90 into 0.45. sorry, 2L. Yes sir. 2L कहाँ से आ गया? सर एक ये वाला लेंथ और एक दूसरा लेंथ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. आपने कवर जो है, आप लेट्स से अगर बीम की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो आपकी लेंथ टोटल ये होगी. तो आपने इस लेंथ में ऐड करना है एक्स्ट्रा लेंथ फॉर हुक एंड एक्स्ट्रा लेंथ फॉर दी बेंड्स. तो अब बताएं. L plus 0.45 L plus 0.45 x plus और कुछ हो गया नहीं? सर ये हुक का भी होगा सर जी. बैंड हुक के लिए कितनी वैल्यू हमने अभी डिराइव की है? हमने भी डिराइव की है ना. एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होती है हुक के लिए? 9d सर. 9d. तो 2 times 9d for the two hooks. Okay. अहमद मोहम्मद है? सर वो तो इस सेक्शन में नहीं है सर. अच्छा, सेक्शन सी में है. अच्छा. Anyone from the females? आप लोग बताएं इसकी लेंथ कितनी होगी एक्स्ट्रा? टोटल लेंथ कितनी होगी? कोई भी फीमेल नहीं है क्लास में? जी तुरसिनी. फातिमा खातून. चले मोहम्मद नोमान आप बता दें. यस सर. सर इसमें L plus 2 times 9d x plus x divided by √3. x divided by √3. यस सर. for 60 तो आई थिंक वही था या 0.6 था सर ऊपर वैल्यूज में. वो मैंने आप लोगों को कहा था डिराइव कर लें, तो वो डिराइव करेंगे तो 0.60 टाइम्स x ही आएगा. ठीक है. ओके सर. वो दूसरे के लिए होगा 30 के लिए x divided by √3 होगा सर. And same is the case for the other bars. इस केस में आपने 2 times extra length required for the band लेनी और 2 times the extra length required for the hooks. And same is the case for these
ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 2 लेग स्टिरअप और 1 लेग स्टिरअप एक्सेट्रा। सर ये 1 लेग स्टिरअप कहाँ पर यूज होते हैं सर? 1 लेग स्टिरअप नॉर्मली यूज ही नहीं होता इतना खास। In most of the cases, maximum 99.9% of the cases, 2 लेग स्टिरअप यूज होता है। ओके सर। हाँ, 1 लेग स्टिरअप जो है आपके जो कॉलम्स बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं तो उनमें नहीं, स्टिरअप्स की बात हो रही है, सॉरी। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं स्टिरअप कॉलम के केस में फिर टाइज हो जाती है। तो टाइज की अगर मैं बात करूं तो 1 लेग आप अगर नंबर ऑफ बार्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना कॉलम में, तो उनको आपस में कन्फाइन करने के लिए आप बीच में भी एक आउटर, अभी इसमें तो आपके 4 बार्स हैं कॉर्नर्स में, लेकिन अगर मिड में भी आपके 3-4 बार्स इधर हैं, 3-4 बार्स इधर हैं, 3-4 इधर हैं, 3-4 इधर हैं, तो ये कन्फाइंड नहीं होंगे। कन्फाइंड ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, कन्फाइंड कंक्रीट और अनकन्फाइंड कंक्रीट। तो अब ये जो रीइंफोर्समेंट बार्स है, तो ये यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा वो कन्फाइंड नहीं होगा। अगर लोड आएगा तो इट कैन बकल आउट। तो इसको हम यहाँ पे एक सिंगल लेग स्टिरअप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। Okay, so now if you are going to estimate the quantity of steel, तो आप क्या कर सकते हैं, ये टेबल यूज कर सकते हैं which is called as bar bending schedule। इसको बार बेंडिंग स्केड्यूल क्यों कहते हैं कि इसमें जो है आपको हर एक इंडिविजुअल रीइंफोर्समेंट बार जो है उसकी लेंथ, उसके नंबर्स के, उस टाइप के कितने नंबर्स आपको चाहिए होंगे और उनकी शेप आपको इस लिस्ट, इस टेबल में से आप देख सकते हैं। अब टेबल ये यहाँ यूज कहाँ पे होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर और आपको जो स्टील फिक्सर है या लेबर है, तो उनको तो उतनी ड्राइंग्स रीड करने नहीं आती, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स या रीइंफोर्समेंट। तो अब आपने उसको बताना है कि आपने कितने बार्स, कितनी लेंथ के काटने और कितने बार्स, कितने स्टिरअप्स बनाने और हर एक स्टिरअप की शेप कितनी होनी, कैसी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, कितने लेंथ का हुक होना चाहिए, एटसेट्रा। सो दिस टेबल इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्पस। आप उनको टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं कि आपको नंबर 5 बार जो है चाहिए और उसकी हर बार की लेंथ होनी चाहिए 10 फुट, और इस तरह के रीइंफोर्समेंट बार्स के आपको लेट्स से 20 पीसेस चाहिए। तो वो आपको उसको शेप भी बता देंगे और उसको नंबर ऑफ बार भी बता देंगे, कौन सा क्या डाया होना चाहिए और कितने नंबर्स होने चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू एज वेल एज हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, कि आप जो है रीइंफोर्समेंट, वो रीइंफोर्समेंट को कट कर ले और प्रॉपर शेप में बेंड कर ले। So this table will include the first column will include the serial number. The second column will tell you the type. For example, if it is a stirrup or if it is a tie, or let's say it is a main bar, distribution bar, or negative bars, etc. And in the third column, you will draw the shape of the bar. For example, the shape of the bar is like as shown in this figure। ठीक है, तो ये आप शेप बना लेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होनी चाहिए स्ट्रेट, फिर ये एंगल कितना होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होनी चाहिए, हुक का साइज कितना होना चाहिए, ये इफेक्टिव डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये शेप आप उनको बनाकर दे देंगे टेबल में।
So this will be covered in this column. Then diameter, यहाँ पे आप बताएंगे कि जो ये शेप आप बना रहे हैं ये किस डाया के बार से बनानी चाहिए बनेगी। तो लेट्स से नंबर 4 डाया बार है, नंबर 5 है, तो जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इस तरह के आपको कितने नंबर्स चाहिए? So let's say if you need these reinforcement bar for slab, तो आप number of bars calculate कर लेंगे, कितने numbers चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। Okay. Now here this is the straight length. Straight length means कि assuming that the reinforcement bar is straight, तो आपको straight length कितनी चाहिए? आप इसमें भूल जाएं कि इसमें कोई बेंड है या हुक है या whatever, वो straight length यहाँ पे लिख देंगे। It will depend upon the span of the slab or span of the beam. Now add the hook allowance. Depending upon the dia of the hook, you will add 9 times dia of bar or whatever the hook allowance is. अब देखेंगे कि शेप में कितने हुक्स हैं, उस हिसाब से आप हुक अलाउंस ऐड कर देंगे यहाँ पर। Then bending allowance, कितने बेंड्स हैं? अगर एक भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अगर एक बेंड है और उसका एंगल 45 डिग्रीज है, सो 0.45 टाइम्स ऑफ x, तो x की वैल्यू पुट करके जो लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। Now adding these 3 columns, straight length plus hook allowance plus bending allowance, 6 plus 7 plus 8, this will give you the total cutting length. The cutting length means आपका जो स्टील फिक्सर है वो एक बड़े reinforcement के पीस में से कितना लेंथ, कितनी लेंथ का पीस काटेगा, उसको बेंड करेगा, तो that will give you that will include all of these lengths. तो उसने straight length कितनी कट करनी है, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, this will give you the cutting length. अब ये एक सिंगल reinforcement बार की कटिंग लेंथ है। तो if I multiply this length with the number of bars, I'll get total cutting length. मुझे टोटल reinforcement की लेंथ कितनी चाहिए ताकि मैं ये इतने नंबर ऑफ बार्स पूरे कर सकूं। Then weight per meter can be taken from this table. Where is this? Kilogram per meter or pound per feet, जो भी units आप use करना चाहें, depending upon the size of the dia of the bar. So you can take this value from that table and multiply this weight per meter with total length of the reinforcement bars from in column 10, and this will give you the total weight of a particular size of bar. तो जो लेट्स से अगर यहाँ पे हम मेन बार्स की बात कर रहे थे, तो जितना वेट मेन बार्स का चाहिए होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। If there are any remarks, you can write here. इसी तरह दूसरे बाकी reinforcement बाकी टाइप्स के लिए भी आप ये प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं, and at the end total आप ऐड कर दें और you'll get the total weight of the steel required in tons or whatever the units that you are using. Is it clear? Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो? No, sir. So let's solve an example problem. ठीक है? ब्रेक करते हैं या ये एग्जाम्पल कंप्लीट करके फिर लेक्चर खत्म करते हैं?
सर ये सर लेक्चर खत्म कर लेते हैं। चलो ठीक है। ये डायग्राम्स आपको क्लियर नजर आ रही हैं या जूम इन करूं? सर ये क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, now let's concentrate on these figures and this question. आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे जितने अच्छी तरह तो उसी तरह उतना इजी होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। So the in question they have given us RCC column with its footing. This is the RCC column and its footing foundation, and you are asked to calculate the amount of cement, number of cement bags, volume of the sand, and volume of the coarse aggregate. This is an Indian book, so this is terminology is used for the coarse aggregate. So basically, they want us to calculate this amount of cement, sand, and coarse aggregate required for the concrete work. All right. Also, they want us to calculate the percentage volume of reinforcement, percentage in terms of weight of the reinforcement divided by weight of concrete, or volume of reinforcement divided by the volume of concrete multiplied by 100 in percentage form. And the third item they require is the preparation of the bar bending schedule. अच्छा, ये एग्जांपल में एज सच जिस तरह पहले मैं सॉल्व कर रहा था एक्सेल शीट में वैसे सॉल्व नहीं करूंगा, but I will explain this calculation to step by step, because यहाँ पे सॉल्व करना एक्सेल शीट में इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिगर्स में डिटेल्स बहुत ज्यादा है, तो कॉन्स्टेंटली हमें शफल करना पड़ेगा फिगर्स से एक्सेल शीट पे और एक विंडो से दूसरी विंडो पे, तो वो so please concentrate on these calculations. Now let's see the plan of this, elevation view, cross section in elevation of this column. So this column is having a straight height of 3.5 meters यहाँ तक। फिर यहाँ नीचे आए तो इसका ट्रेपेजॉइडल शेप में you can imagine कि चारों साइड पे एक स्लोप है, जिस तरह के एक पिरामिड में होता है, एहराम मिस्र, उस टाइप की शेप है, पिरामिड से बना हुआ है। एंड देन बॉटम जो है, बेस जो है, फिर वो है रेक्टेंगुलर प्रॉपर क्यूबिकल शेप है, प्लेन शेप है। सो दिस हाइट इज एक्चुअली 0.5 meter and this height is 0.3 meters, and the height of or thickness of PCC is 0.15 meter. अच्छा, इसमें आपको स्टील के वेट्स भी दिए हुए हैं, जो स्टील बार्स यूज हुए हैं। 8 मिलीमीटर डाया का है 0.39 किलोग्राम पर मीटर, 12 मिलीमीटर डाया का है 0.89 किलोग्राम पर मीटर, एंड 16 मिलीमीटर डाया का है 1.58 किलोग्राम पर मीटर। यहाँ पे आपको कंक्रीट की रेशो दी गई है 1:1.5:3। ठीक है। यहाँ पे आपको टाइज का बताया गया है कि टाइज आपने यूज करनी है 8 मिलीमीटर डाया बार की, एंड देयर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग विल बी 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। Similarly, in the column, longitudinal reinforcement will be of 16 millimeter dia, and there will be 4 number of such bars, one at each corner, 1, 2, 3, 4. Then if we talk about the foundation, so in the foundation there will be a mesh of reinforcement running in both directions, and the dia of the bar used in this reinforcement is 12 millimeter dia bar, and this will be having 10 centimeter center to center spacing both ways. Look at these dots, 1, 2, 3. आपको पता है कि how to read these dots and these lines? What does this dot means? So these are bars, steel bars. Running in which direction?
in transverse directions. Or yes, transverse direction, or you can say running in perpendicular direction to your screen or your page. ठीक है, out of Yes, plane. sir. Yes, sir. तो इस डायरेक्शन में आपने 10 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर स्पेसिंग देनी है और ये बार्स ले करने हैं। एंड सिमिलरली जो ये हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन शो हो रही है ये वाले बार्स, अब ये जो है पैरेलल टू द स्क्रीन है और पैरेलल टू द पेज है, दे विल बी आल्सो हैविंग अ स्पेसिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अच्छा, फुटिंग के क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस देख लेते हैं। The dimensions are 1 meter in this direction and 1 meter in this direction. And the PCC, this dotted line is showing you the PCC. So PCC is having a dimension of 1.3 meters cross 1.3 meters. I think this was all about the figure. यहाँ पे आपको रेट्स भी दिए गए हैं। the rate of cement concrete is 6,480 rupees per cubic meters, and PCC is having 4,390 rupees per cubic meter, and so on. Centering work is having this much rupees per square meter. Centering work for column is 350 rupees per square meter. Steel bars is 64.60 kilogram. 64.6 rupees per kilogram, and mild steel reinforcement is 64.6 rupees per kilogram. Now let's solve the example. Let me zoom into this. ये कर्सर नजर आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। So let's calculate the volume of concrete first. So let's see this figure. Volume of concrete क्या होगा? Volume of concrete in this straight portion of the column plus volume of concrete in this pyramid shape of this pyramid shape portion, and the volume of concrete in this base of this foundation, क्योंकि ये तमाम कंक्रीट जो है एक ही रेशो में है। फिर जो हम पीसीसी के लिए अलग कैलकुलेट कर लेंगे। So volume of concrete in this straight portion of this column will be 0.3 meters in this direction and 0.3, look at this figure, 0.3 meters in this direction and 0.3 meters in this direction, and the height of this straight portion is 3.5 meters. So the volume of concrete in column is, numbers are 1, there's only one column, length is 3.5 meter, look at this, 3.5 meter, breadth is 0.3 meters and depth is 0.3 meter. Multiplying these values, this will give you 0.32. The second item is footing without slope. This is talking about this portion. Footing without slope, so height of this thickness is thickness or height, whatever you are giving it name. So 0.3 meter cross 1 meter cross 1 meter. So 0.3 meter cross 1 meter cross 1 meter, and there are one column. So multiply these values and this will give you 0.30. Now the sloping part of this footing. So you can use this formula for calculating the volume of this sloping portion. This formula is saying that the volume of the sloping portion will be h over 3. H is the 0.3, this value, this height. So 0.3 divided by 3 into A1. A1 is the area at the top, cross-sectional area at the top of this sloping portion, and the A2 cross-sectional area at the bottom of this sloping portion, plus under the root A1 into A2. Using this formula, you can calculate this volume, and this comes to be 0.23 cubic meters. A1 is 0.3 cross 0.3,
or you can interchange these A1, A2. So 0.3 into 0.3 is equal to 0.09, and this other A will be 1 cross 1. So 1 cross 1 is equal to 1 meter square. So adding them all, you will get 0.85 cubic meters of concrete in this column. Now, if we want to calculate the volume of concrete in PCC, so 0.15 cross 1.3 cross 1.3. This will give us the volume of concrete required for the PCC. कोई confusion तो नहीं है यहाँ तक? सर ये यहाँ पर प्लेन में 0.9 सर जी, ये लेंथ किस चीज की है सर जी? 0.9 okay, 1 meter is the length, actual length of the foundation, and the 0.9 meter is showing you the length of this reinforcement bar. तो अगर आप 1 में से कवर माइनस करते हैं, कवर माइनस करें, अगर लेट से यहाँ पे कवर जो है नॉर्मली इन्होंने लिया हुआ है 0.05 मीटर्स का, तो अब 0.05 मीटर्स दोनों साइड से माइनस करते हैं तो यू विल गेट 0.9 मीटर्स. ठीक है? ओके सर. So the volume of concretes, we are done with the volume of concrete. So let's now calculate the formwork, total quantity of formwork. And the formwork or shuttering or etc. is calculated in the area units. So what will be the formwork required for this column? Area of the formwork required for this column. Definitely the area of this side plus area of that the other side plus area of the back side plus area of the this left side. And what is the area of this one side? 0.3 cross 3.5. So 0.3 cross 3.5 multiplied with 4 to get to cover all of these 4 sides. So look at this, 0.3 into 3.5 plus into 4 for 4 sides. This will give you 4.2 square meter. Similarly, if I'm talking about these areas without slope, so 0.3 cross 1 meter will give you the area of formwork required for one side, and but this is a square footing, so all of these dimensions, all of these sides will be having same dimension. So if I multiply this one area of one side with 4, I'll get the area for 4 sides. 4 into 1 into, this is not 3, this is 0.3. This is a typing mistake here. आप कैलकुलेट करें तो ये अगर आप 0.3 से कैलकुलेट करें तो ये 1.2 ही आएगा. सो जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे इन्होंने गलत की हुई है. अगर आप 3 से करते हैं तो ये कुछ और आ जाता है. 3 into 4, 4 3 is 12, तो 12 आता है. Other if this is 0.3, then it will be 1.20. Now the area of the formwork required for this tapered portion or sloped portion, ये थोड़ा सा tricky है. Assuming that we are not provided with this 0.61 meter length, अगर यहाँ पे इस शेप को मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो this dimension is having length, or the dimension of this side is 1 meter, and this is having
length of 0.3 meters, but I don't know what is the length or height of this trapezoid from this point to this point. ठीक है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये स्लोप्ड पोर्शन है, तो ये प्लान से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, सॉरी टॉप व्यू से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो दिस हाइट इज नोन टू मी, दिस इज 0.5 meters, and if I calculate this base, so I can use the trigonometric functions and can calculate this hypotenuse. So calculating this base, so this is total 1 meter, and this 1 meter, and this is 0.3 meters. This is 0.3 meters. So if I deduct 1 meter from 0.3 meter from 1 meter, so I'll be getting a total of this length plus this length. So if I divide this length, these two lengths by this total by 2, so I'll get the individual length of this side. Same is done here. 1 minus 0.3 divided by 2, it will give me 0.35, which is the length of this base, and 0.5 meter is the height of this perpendicular side. And you can calculate the length of this hypotenuse by Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This will give me 0.61 meters. Now you know the height of the trapezium, and you know the base length, and you know the top length. So you can use the area of formula for calculating the area of the trapezium, which is the this length plus this length divided by 2 into height. So this length 0.3 plus 1 divided by 2 multiplied with the height of the trapezium. This will give me the area of this trapezium. But there are 4 such type of sides, so multiply it with 4, so you'll get this total 1.59. If I add total quantity of the formwork or shuttering, so this will give me 2.79, and shuttering for the column is 4.20. Is it clear? Yes, sir. सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. So we are done with the volume of concrete and the area of the formwork required. Now let's calculate the reinforcement quantity. So first of all, let's calculate the amount of reinforcement required for the longitudinal bars in the columns. ठीक है, ये जो 4 bars हैं, इनकी quantity और length और total weight हम calculate कर लेते हैं. So to get the total quantity, first of all, let's calculate the length of a single bar. Cutting length of the single bar. तो cutting length क्या होगी? First of all, ignoring the bends या hooks, हम ignore कर देते हैं. So this is 3.5 plus 0.5 plus 0.3. ठीक है, देखें 3.5 plus 0.5 plus 0.3. अब यहाँ पे आके ये बार इस तरफ बेंड भी हो रहा है. So I'll assume that this length is also 0.3. So another 0.3 for this. अब यहाँ पे 2 hooks हैं.
एक ये हुक है और एक ये हुक है। सो 2 times 9 times डाई ऑफ द बार, ये हुक के लिए मैंने ऐड कर दिया। एक हुक के लिए 9 times डाई ऑफ बार ऐड करते हैं, तो दिस इज द डाई ऑफ बार। डाई ऑफ द बार इज 16 मिलीमीटर, ठीक है। तो 2 times 9 times डाई ऑफ बार, ये ऐड कर दिया। अब डिडक्शंस क्या क्या करनी है मैंने, यहाँ पे मैंने कवर भी शामिल किया हुआ है, बट reinforcement will not go till the edge of this or till the face of this column, so यहाँ से कवर में माइनस कर देता हूँ 0.05, और सिमिलरली यहाँ नीचे से भी मैं कवर माइनस कर देता हूँ, तो 2 times कवर माइनस 2 times 0.05। हालांकि यहाँ पे 3 times होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कवर है, सो खैर कोई बात नहीं, 2 times ले लें या 3 times ले लें। 0.05 ये कवर हो गया माइनस। अब यहाँ पे नोट करें, ये जो लॉन्गिट्यूडल बार है ये रेस्ट कर रहा है जो फाउंडेशन में जो 2 लेयर्स हैं बार्स की, एक लेयर इस डायरेक्शन में है और दूसरी लेयर दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 2 लेयर्स पे रेस्ट कर रहा है। हर एक लेयर की थिकनेस क्या होगी, हर एक लेयर की थिकनेस होगी इक्वल टू दी 1 टाइम डाई ऑफ बार। तो यहाँ पे कौन से डाई ऑफ बार यूज हुआ है, 12 मिलीमीटर का, तो 2 times डाई ऑफ बार फॉर दी फाउंडेशन बार्स। तो ये सारा कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है 4.76 मीटर्स। दिस इज द स्ट्रेट लेंथ और कटिंग लेंथ ऑफ द बार, and 4.76 meters. So now we have 4 number of bars, so 4.76 multiplied with the 4, this will give me 19.04. These bars are having a weight of 1.58 kilograms per meter, so multiply 1.58 kilograms per meter with 19.04, this will give you 30.08 kilograms of reinforcement, ठीक है। Should I move forward? Yes, sir. Okay. जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ। सर ये बॉटम बार्स का जरा फिर से बताएं सर जी। अच्छा, एस्टिमेशन के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इमेजिन करें ये कॉलम है और इसमें आपने लॉन्गिट्यूडल रिइंफोर्समेंट प्लेस करनी है। प्लान में आप ये इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडल बार्स हैं वो इस शेप में है, एल शेप में। अब ये कहाँ पे प्लेस हुए हैं, ये प्लेस हुए हैं जो फाउंडेशन की रिइंफोर्समेंट है उसके ऊपर प्लेस हुए हैं। तो फाउंडेशन की रिइंफोर्समेंट में हमारे पास 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में बार्स जा रहे हैं और दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन डायरेक्शन में बार्स जा रहे हैं। तो ये 2 लेयर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इन 2 लेयर्स की थिकनेस क्या होगी, थिकनेस होगी एक लेयर में जो बार का डाई है प्लस दूसरी लेयर में जो बार का डाई है, दिस विल बी टोटल थिकनेस ऑफ दिस लेयर। बट इनिशियली मैंने अज्यूम किया कि ये 0.3 मतलब इनिशियली मैंने अज्यूम किया कि ये लेंथ जो है यहाँ तक बॉटम तक आई हुई है। फिर मैं इसमें से चीजें माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या माइनस करूंगा, एक कवर माइनस कर दूंगा और दूसरा क्या माइनस करूंगा, जो थिकनेस ऑफ 2 layers of reinforcement for the foundation, and the thickness of each layer is 12 millimeter. 12 millimeter. So 2 layers are 2 multiplied by 0.012. This is in millimeters and we are working in meters here. तो इसलिए हम 0.012 लिख रहे हैं, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके। Now clear है? यस सर। ओके, ये हो गया कॉलम के मेन स्टील बार्स। अब आते हैं फुटिंग के ऊपर। तो फुटिंग में आप देखें कि
1 मीटर जो है फुटिंग का साइज है, और उसमें जो रीइंफोर्समेंट का साइज है वो अगर मैं कवर माइनस करूं हर साइड से 0.05 मीटर और 0.05 मीटर, तो जो लेंथ ऑफ बार आ रही है वो है 0.9 मीटर्स। अब यहाँ पे फिगर में शो है कि दोनों साइड्स पे हमने हुक भी देना है, तो 0.9 meters plus 2 times hook allowance. So length of the bar, cutting length of the bar for foundation will be 1 meter minus cover, 2 times cover, plus hook allowance, 2 times 9 times of bar. So this will give you length of one bar equal to 1.12 meters. All right. Now we have to calculate how many number of bars will be there in this direction as well as in this direction. We have to calculate the total number of bars. So the number of bars are 0.9, क्योंकि cover में तो आप reinforcement नहीं देते, तो 0.9 divided by center to center spacing, which is shown here as 10 centimeters center to center. So in meters this will be 0.1. So length of the component divided by center to center spacing plus 1. This will give you number of bars in one direction. But the both directions are same, and both directions are in both directions the length of the bars are same. So I can simply multiply it with 2. So I'll get the total number of bars in two directions. So the total number of bars is 20. Length of one bar is 1.12 meters. So the 1.12 multiplied by 20, this will give me the total length of reinforcement required for the foundation. And the dia of the bar used in this foundation is having a weight per meter equal to 0.89 meters. 0.89 meters kilogram per meter multiplied by total length of this total length of the reinforcement will give you 19.94 kilograms of the just a second. Acha. So this will give me the 19.94 kilograms of steel in foundation. तो इसने शायद फिर यहाँ पे ऐड किया है 30 को और 19.94 को 30, और ठीक है, ये जो कॉलम की रीइंफोर्समेंट और फाउंडेशन की रीइंफोर्समेंट को ऐड करके टोटल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे इसने लिखी हुई है 50.02 kilograms. Now let's calculate the number of ties used in the columns. So first let's calculate the length of each length of the steel in required for one tie. So the length of steel will be 0.3 meters, the total column dimension if we deduct the cover. So this will give me the 0.25. ठीक है, तो कवर माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगी, और फिर जो है दोनों साइड की लेंथ्स को ऐड करेंगे, चारों साइड्स की लेंथ्स को ऐड करके उसमें 2 हुक की अलाउंस दे देंगे. तो दिस विल गिव मी द टोटल लेंथ ऑफ द स्टिरअप और टाई, whichever is the case. अगर ये बीम होती तो मैं कहता स्टिरअप, अदरवाइज इट इज अ टाई. So the length of reinforcement required for one tie is 1.13 meters. Now calculating the number of ties required. So number of ties required will be first of all calculating the length of the component. So 3.5 plus 0.5 plus 0.3 minus cover from this side and bottom cover for this side, and minus the reinforcement, 2 layers of reinforcement, thickness of 2 layers of reinforcement for foundation. You will reach up to this point. Now divide this length of component with the by the center to center spacing, and add 1 with the resultant number. So look at this. So length of the column is 3.5 plus 0.5 plus 0.3 minus 2 times cover.
यहाँ पे इसने फाउंडेशन वाले रीइंफोर्समेंट नहीं माइनस किया, अगर करते भी हैं तब भी ठीक है, नहीं भी करते तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टिरअप का फर्क आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपके पास लेंथ ऑफ कॉलम आ गई। तो नंबर ऑफ बार्स विल बी 4.2 डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग plus 1. This will give me 28.84 stirrups. So these are in numbers. So I'll round it off to 29. सर ये 1 हम ऐड क्यों करते हैं सर? अच्छा, 1 क्यों ऐड करते हैं? चलो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर लें तो फिर मैं बताता हूँ। So 29 numbers, length of one bar is 1.13. So 29 into 1.13 will give me the 32.77, and the for ties 8 millimeter dia bar is used, and the unit weight of the steel 8 millimeter dia bar is 0.39 kilogram per meter. So 0.39 kilogram per meter into 32.77, this will give me 12.78 kilograms. So this is the total quantity of steel required for the stirrups or ties. सर यार बी किस तरह कैलकुलेट किया सर? ये बी? यस सर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि 0.25, this 0.2 is total length of the total width of the column is 0.3 minus cover for each side. This will give you 0.25. अब इन्होंने ये किया है कि इंटीरियर स्टिरप्स की लेंथ, स्टिरप्स का भी डाया माइनस कर दिया है। ये जो 8 मिलीमीटर डाया है वो स्टिरप्स का डाया है। तो जब आप स्टिरप्स का डाया माइनस कर देते हैं तो आपके पास इंटीरियर एज आ जाता है। नाउ इफ यू कैलकुलेट दी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग दी लेंथ ऑफ दी or you can say parameter using the interior length of a rectangle, तो आपके पास टोटल लेंथ कम आएगी, और अगर आप एक्सटीरियर लेंथ यूज करते हैं तो आपके पास टोटल लेंथ ज्यादा आएगी। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इस केस में आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ लेनी चाहिए, बट इन दिस केस द author has taken the interior length. ठीक है? यस सर। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था कि हम +1 क्यों करते हैं, तो अच्छा वो कैसे एक्सप्लेन करें? अच्छा, लेट्स से ये जो कॉलम, ये टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल में यहां से यहां तक ले लेता हूं, ये दो कॉलम्स में इग्नोर कर देता हूं। तो इफ दिस इज द टोटल लेंथ और टोटल स्पैन, ठीक है, और इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या होगी? ये स्पेसिंग है। सो इफ आई डिवाइड दिस टोटल स्पैन बाय द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये सेक्शंस आ जाएंगे, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन एंड 6 सेक्शन, ठीक है। यस। इसमें एट द एंड आपके पास एक बार जो है वो शॉर्ट हुआ है, तो इसलिए हम एट द एंड हम एक ऐड कर देते हैं। ओके सर। क्लियर हुआ है या नहीं? दोबारा कोई और एग्जांपल दे के सवाल। यस सर, क्लियर हो गया सर। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक बार जो है शॉर्ट आता है, हमारे पास एक बार जो है कम आता है जब हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग के नंबर्स आ रहे होते हैं। ये एक आ गया, एक ये आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें नंबर ऑफ बार्स चाहिए, ये लाइंस चाहिए हमें। तो आप चेक करें कि
अगर मैं लाइंस को कैलकुलेट करूं तो वो ये लाइंस जो हैं इन स्पेसिंग से एक ज्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं लाइंस को काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो दिस spacing plus 1. I hope it should be clear now. ओके सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे इन्होंने इसका एक एब्स्ट्रैक्ट बना लिया है, समरी सी बना ली है। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि सीमेंट की इस रेशो की क्वांटिटी हमारे पास 0.85 है, आई है, और हमारे पास रेट जो है वो पहली स्लाइड में गिवन है, ये रेट है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास सीमेंट कंक्रीट की आ रही है, ये पीसीसी की यूनिट रेट ये है, और ये इतनी क्वांटिटी है, और इसका ये इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है इसका। ठीक है, फिर ये यहाँ पे इन्होंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया और फिर 5% कंटिजेंसी ऐड किया, इसका 5% कैलकुलेट किया और यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों को ऐड करके ग्रैंड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। देन इस टेबल में इन्होंने क्या किया है कि सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट किया, जस्ट सीमेंट की। सीमेंट आपका यूज हो रहा है एक यहाँ पर कंक्रीट कॉलम फुटिंग में, कॉलम और फाउंडेशन में, और दूसरा यूज हो रहा है पीसीसी में। तो कॉलम में कितना यूज हो रहा है, वही तरीका जो आपको मैंने बताया था, कि मैंने बताया हुआ ना वो तरीका आपको, रेशो अगर गिवन है तो तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, बताया मैंने? यस सर। हाँ जी, उस तरीके से इन्होंने नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर लिए और टोटल यहाँ पे लिख दिया। फिर पीसीसी के लिए इन्होंने नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज की है। इन्होंने पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट किए। इस रेशो में आपके 1 क्यूबिक मीटर्स में कितने बैग्स लगेंगे, और इस रेशो में आपके कितने 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग्स लगेंगे। फिर आपके पास टोटल कितने क्यूबिक मीटर्स हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू आर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बैग्स। समझ आइए? तो आप आपकी मर्जी जिस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पे छोटे मोटे मिसलेनियस आइटम्स के लिए भी थोड़ा बहुत सीमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो एक 1.47 यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ गए 10। एक बैग का वेट जो होता है सीमेंट बैग का वो 50 किलोग्राम होता है, तो टोटल 10 बैग्स का वेट जो होगा वो होगा 500 किलोग्राम्स। Then sand required is this much and coarse aggregate required is this much. कैलकुलेट कर सकते हैं ना खुद ही, आपके पास कंक्रीट का वॉल्यूम है, पीसीसी का वॉल्यूम है, रेशो पी गिवन है। यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर कैलकुलेट किया है इन्होंने परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, कॉलम्स में कितनी है और फुटिंग में कितनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 0.32 cubic meters and weight of steel required in column is in longitudinal reinforcement it was 30.08, and for the ties, lateral ties is 12.78 kilograms, so total weight of steel required is 42.86 kilograms. अब क्या किया है कि इन्होंने दोनों कंक्रीट को और कंक्रीट की क्वांटिटी को स्टील की क्वांटिटी को सेम यूनिट्स में लाने के लिए कंक्रीट वॉल्यूम में गिवन है, तो इस स्टील के वेट को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। कैसे? यूजिंग द यूनिट वेट ऑफ द स्टील विच इज 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 42.86 divided by 7850 kilogram per cubic meter, it will convert this weight of the steel into volume, and divided by the volume of steel divided by the volume of concrete multiplied by the 100. This will give you the percentage value of reinforcement in the column. This is 1.7%. तो यहाँ से आप थंब रूल्स डिराइव कर सकते हैं, जो हमने पिछले स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने थंब रूल्स डिस्कस किए, तो यहाँ से आप
डिराइव कर सकते हैं या अपने लिए कोई थंब रूल बना सकते हैं। इन फुटिंग same approach is used and the percentage of volume or percentage of reinforcement is 0.48% or 0.5%. And the last part is the bar bending schedule. तो बार बेंडिंग स्केड्यूल आप बनाएंगे, आप बताएंगे कि कॉलम में reinforcement है और डाया एंड टाइप। तो डाया ऑफ द बार ये है और टाइप जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ये टाइप है। अब शेप ऑफ द बार इज दिस, यहाँ पे देखें शेप इसकी, यहाँ से हुक है, फिर स्ट्रेट आया हुआ है, फिर एल एंड अगेन हुक। सो यहाँ पे हर एक आइटम का हर एक फीचर का डायमेंशन बता के आपने उसकी शेप बनानी है। यहाँ पे आपने टोटल लेंथ लिख देनी है कि टोटल लेंथ ऑफ द कटिंग लेंथ क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ बार्स हैं, टोटल लेंथ क्या है और वेट क्या है और टोटल वेट क्या है। एंड सेम इज द केस फॉर द अदर टाइप ऑफ reinforcements एज वेल। यहाँ पे आप लेटरल टाइज हैं, इसके डायमेंशंस ये हैं, यहाँ पे इतना आप हुक देंगे, हर एक इंडिविजुअल लेटरल टाई की कटिंग लेंथ ये है। टोटल नंबर्स इज दिस वन 29, टोटल 29 टाइज हैं, टोटल लेंथ इज 32.77 एंड दिस ऑन। और फुटिंग में जो reinforcement चाहिए उसकी डिटेल्स ये है। सो आई होप it is clear. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। कुछ समझ आया कि नहीं? यस सर, आई ये समझ सर, ये बहुत समझ। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जब लॉन्ग होम इस बाय द एंड ऑफ दिस वीक में लॉन्ग होम असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। उसमें आपने करना ये होगा कि फ्रॉम द फाउंडेशन टू ब्रिक सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर में सारी आइटम्स की क्वांटिटी, फिर उसमें जो स्लैब्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, उनमें reinforcement और कंक्रीट की क्वांटिटी, तमाम चीजें कैलकुलेट करनी होंगी आपने। ड्राइंग्स गिवन होंगी आपको। सर अभी कितने असाइनमेंट करेंगे? जी सर कितने असाइनमेंट और करेंगे सर? आप ये लॉन्ग होम असाइनमेंट बस लास्ट असाइनमेंट है, ठीक है? अभी तक आपकी 3 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं ना? यस। हाँ, बस ये लॉन्ग होम असाइनमेंट आपकी लास्ट असाइनमेंट है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो